Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to explain you quantifiers and intensifiers. It's very interesting how quantifiers and intensifiers are used, how interesting they are, and how can you be able to use it in your writing, in your speaking, and your listening. All right, its understanding is very important for your English language. Okay, now let's see first about the intensifiers. An intensifier is a word that strengthens or weakens another word. So remember that इंटेंसिफायर क्या काम करता है, या तो किसी वर्ड को स्ट्रेंथन करता है या उसको वीकन करता है. Another definition is that an intensifier has no real meaning by itself and can usually be removed from the sentence. हम इसको हटा भी दें एक सेंटेंस से तो इसके रियल मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता. Next we see that an intensifier is a word that strengthens or weakens another word. ठीक है, वीक करता है दूसरे वर्ड्स को. Usually the word immediately to its right. Next definition, intensifiers are modifiers. क्या काम करता है? Modify करने का काम करता है. In a sentence that add more emotions to the word that are modifying. They give emphasis and extra strength to your sentence. वही स्ट्रेंथ के लिए हम यूज करते हैं. इंटेंसिफायर्स आर इफेक्टिव एट गेटिंग योर पॉइंट अक्रॉस इन अ क्लियर वे. आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को विद इमोशंस, जिस तरह से हम अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं. एडजेक्टिव्स को सिमिलरली इंटेंसिफायर उसमें हम एडजेक्टिव्स के साथ, वर्ब के साथ, नाउन्स के साथ, सबके साथ यूज़ करते हैं. इंटेंसिफायर कैन बी यूज्ड विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब और नाउन्स. एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, आई एम एंग्री. इस पे हम क्या ऐड कर लेते हैं? आई एम वेरी एंग्री. हमने ऐड कर लिया एक इंटेंसिफायर. एक और हम देख लेते हैं, आई एम फेयरली एंग्री. अब ये दोनों डिफरेंट हैं. एक फेयरली एंग्री और वेरी एंग्री दोनों एक दूसरे के साथ डिफरेंट है. एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और एक है कि ठीक है एंग्री हूँ बट नॉट वेरी मच. So this is the difference between the intensifiers as well. Now let's see about the types of intensifiers. Okay, students, first we see the examples of intensifiers. Today's English lesson was interesting. Simple. अब हम इसमें ऐड करते हैं इंटेंसिफायर को. Today's English lesson was incredibly interesting. हमने incredibly को इसमें ऐड किया इंटेंसिफाई करने के लिए. That mobile is expensive. सिंपल सेंटेंस है. अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो एडजेक्टिव है उसको हम कैसे चेंज करेंगे. एडजेक्टिव कौन है? एक्सपेंसिव है, जो मोबाइल को, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव. वेरी हमने एक इंटेंसिफायर इसमें ऐड किया. टुडे वाज अ कोल्ड डे. अब हम क्या कर रहे हैं इसमें एक इंटेंसिफायर को ऐड करके, टुडे वाज सच अ कोल्ड डे. इंटेंसिफाई. सो हियर आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इंटेंसिफायर्स आर added in the sentences. Now let's see the types of intensifiers. Intensifiers are grouped into three categories. The emphasizers, those that convey emphasis on actions. किस चीज़ के ऊपर जो एक्शन है उस पे एम्फेसिस का कन्वे करता है. एम्पलीफायर्स के तौर पे काम करता है. आपको पता है साइंस में जिन्होंने पढ़ा है एम्पलीफायर का काम किस तरह से होता है. कम्युनिकेशन के अंदर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए. दोज दैट एम्पलीफाई डिग्री ऑफ एक्शन. यहाँ पे हम एम्पलीफाई किसको कर रहे हैं? एक्शन को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करेंगे. डाउन टोनर्स. रिवर्स एक्शन में क्या होगा? दोज दैट प्ले डाउन डिग्री ऑफ एक्शन. ठीक है, डाउन डिग्री को डाउन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. दीज आर कॉल्ड डाउन टोनर्स. सो द three types are emphasizers, amplifiers and downtoners. Emphasizers को देखते हैं. The emphasizers are made up of words such as really, simply, certainly, definitely, apparently, basically, obviously, literally, as well as for sure. So ये examples हैं emphasizers की. These words add up to make the actions of verbs stronger. ये क्या कर रहे हैं? जो action है, एक्शन वर्ब जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड, आई रियली एडमायर द ऑथर ऑफ दिस ग्रेट बुक. देयर इज नो लंच ब्रेक. वी वुड लिटरली स्टार्व. एंडी सिंपली लाइक्स रीडिंग. आई विल सर्टेनली गो होम टुनाइट. इफ ही कीप्स स्टडीइंग हार्ड ही विल मेक द बार फॉर श्योर. शी ऑब्वियसली स्टे बैक. So these are the examples of emphasizers. Now let's see the amplifiers. The amplifiers include amplifying words. Amplify किस तरह से करते हैं? Absolutely, completely, entirely, totally,
undoubtedly, so well, or heartily, etc. These words add up in the sentence to strengthen or intensify the meaning of the word. Examples देखिए, her improvement in mathematics is absolutely amazing. Absolutely. We won because we practiced so well. Her performance completely eclipsed those of her contemporaries. She heartily wished everyone a happy new year. Undoubtedly, they knew each other in the past. His quotations include everything totally. I so much desire to make my paper so much. So these are the amplifiers, amplifying the words. Downtoners, the adverbs that reduce the importance of verbs, adjective or even adverbs. These adverbs are hardly, barely, scarcely, nearly, etc. The downtoners include sort of, to some extent, mildly, almost, not so much, kind of, all but, merely, simply. So these are downtoners. Examples देखते हैं. I hardly hear your voice. We are nearly closer to you. They barely found the solution. So these are some of the examples of downtoners, which are the intensifiers. So students, now let's see some negative sounding intensifiers, just we have already mentioned. You see oddly negative sounding words such as awfully, dreadfully, insanely, and terribly. They provide strength to the word they modify. Strength provide कर रहे हैं, negative sounding है. You have to understand downtoners हैं. You look awfully pale. Awfully यहाँ पे intensifier use हो रहा है. I am dreadfully sorry. That is an insanely clever plan. Insanely. Okay, the pressure is dropping terribly quickly. Terribly. Okay, so these are negative sounding intensifiers. So more information you have to keep in your mind that when you have to avoid intensifiers. Intensifiers are best avoided in formal writing because many consider their use as lazy writing. When writing formally, the level of intensity should be achieved through word choice. Example, by using strong adjectives instead of intensifiers. You see, it is very tasty. This is considered as lazy writing. It is delicious. So very tasty की जगह हम क्या use कर सकते हैं? It is delicious. There is no need for an intensifier with a strong adjective like delicious. हमारे पास word मौजूद है, तो हम उसकी जगह इस तरह की intensifier use करके नहीं use करेंगे. Just like very tasty. Adjective like delicious, in fact very delicious and extremely delicious sound unnatural. Unnatural लगता है, इसलिए हम उसको use वहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि itself it's a very good intensifier. Now let's see something more about intensifiers. To overcome the diminishing effect of intensifier, some writers, especially in informal writing, develop their intensifiers. Informal writing में तो हम use कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग के अंदर हमें ख्याल करना पड़ेगा कि किस तरह के इंटेंसिफायर यूज करने हैं और कौन से नहीं करने. शी ट्राइड वेरी वेरी हार्ड. इनफॉर्मल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल में इट्स ओके, अदरवाइज नॉर्मल क्लिकल स्ट्रक्चर में चल जाता है, लेकिन फॉर्मल राइटिंग के अंदर यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस इंटेंसिफायर repeatedly. Tomorrow's meeting is so terribly important. So terribly important. Using two intensifiers tells your writer that you don't have the skill to find the right words. This practice might be efficient in, say, a text or an informal email, but definitely don't double them up in anything with even a smattering of formality. Alright? Let's see something more about intensifiers. Intensifiers like completely, absolutely, and really add little to readers' understanding. Writers use them when they are trying to give strength to a dull word. अगर हमें dull word को strength देनी है तब हम इनको use करते हैं. Instead, replace your weak word with something strong enough that you don't need the really. हम क्या कर सकते हैं? Instead of saying she was really pretty, say she was stunning. ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज करने के बजाय हम इन डल वर्ड्स के बजाय हम क्या यूज करेंगे? शी वाज स्टनिंग. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स टोटली हॉट, कॉफी इज टोटली हॉट के बजाय हम क्या करेंगे? सो इट इज स्टिफलिंग. Here you can see
इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स को एम्पलीफायर्स, एम्फसाइजर्स, डाउन टूरर्स में किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. Most common intensifiers, एक list है. Here you can easily understand that intensifiers reinforce the meaning of the sentence. They come before the word they describe. Very, quite, so, such. So ये सारे के सारे आपके पास good examples available हैं. Here you can see intensifier किस तरह से इनकी रेटिंग मैक्सिमम है, लेस है और मिनिमम है. किस तरह से रियली, वेरी, एक्सट्रीमली जो है ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं. क्वाइट, रादर मिडल में आते हैं और समवट, प्रीटी, फेयरली जो है वो सबसे लो में आते हैं. Here you can see that words और उनकी जगह जो हम strong intensifier यूज करेंगे, जैसे very big की जगह हम enormous, huge यूज करेंगे. very small की जगह tiny, very clever की जगह brilliant, very bad की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, awful, terrible, disgusting, dreadful. very sure की जगह certain, very good की जगह excellent, perfect, ideal, wonderful, splendid. very tasty की जगह delicious. अब देखें जो इंटेंसिफायर हैं वो किस एडजेक्टिव के साथ होने चाहिए. डेंजरसली इल, डेंजरसली हॉट, सीरियसली हर्ट, सीरियसली डैमेज्ड, हाईली सक्सेसफुल, हाईली इंटेलिजेंट, बिटरली डिसअपॉइंटेड, बिटरली अनहैप्पी, बिटरली कोल्ड. इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगी और ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो सकती है कि अगर आप इंटेंसिफायर को उनके एडजेक्टिव, उनके एडवर्ब्स के वर्ब या नाउन के साथ याद करते हैं. जिस तरह से आप वर्ब्स को याद करते हैं उनके प्रेपोजिशंस के साथ, इसी तरह से इंटेंसिफायर को इनके साथ जब आप वर्ड्स के साथ याद करते हैं तो आपके लिए एग्जाम में बहुत आसानी होती है. तो आपको पता चलता है किस वर्ड के साथ आपने कौन सा इंटेंसिफायर यूज करना है. सो हियर यू कैन सी अ वेरी गुड वर्कशीट वेयर यू कैन इजीली कंप्लीट द इंटेंसिफायर इन दीज सेंटेंसेस. द हाउस वाज बिग, वेयर यू हैव टू पुट इट, द प्लेसमेंट. ऑलराइट, इट्स वेरी इजी फॉर you and understanding as well. Guys, in this worksheet, you can easily see that which of the intensifiers you have to use, which are the correct, as this will be there in your exam. So this is a very good example for you, and then you can see the result solution of this exercise as well. So here are solutions 1 and 2. 2 can also be correct, or only one can be correct and 2 also be correct. So here you have to see which option is correct. Now there are some more worksheets whose answers are not shared. You have to solve it by yourself. So interesting for you to complete these sentences and enhance your intensifiers learning. Now let's see quantifiers. We have already discussed very well about the intensifier, and now what are the quantifiers? Quantifiers tell us something about the amount or quantity of something, particularly a noun. Some quantifiers express a small or large quantity. Small, just like I have a few things to do before finishing work. Large के लिए हम क्या use करेंगे? I have many things to do before finishing work. Some quantifiers express part of or all of a quantity. पार्ट ऑफ में कैसे होगा? इट रेन्स मोस्ट डेज इन विंटर. ऑल के लिए इट रेन्ड ऑल डे यस्टरडे. रिमेंबर. Now let's see the types of quantifiers. There are two types of quantifiers: universal quantifiers and existential quantifiers. The universal quantifier is used for every object in general. Generally हम हर object के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको कहते हैं universal quantifier. और the existential quantifier is used in statement for some objects. Some objects के लिए particular चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम कहते हैं existential quantifier. क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश में काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और दोनों के साथ. जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स में हमारे पास मच है, अ बिट, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लिटिल, वेरी लिटिल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ. काउंटेबल के साथ कौन से यूज होते हैं? अ मेजॉरिटी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, सेवरल, मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू.
दोनों के साथ कौन से यूज होते हैं जो हमने दोनों में यूज किए? ऑल, इनफ, नन, नो, सम, मोर, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, लेस, लीस्ट, any, not any, plenty of. So these are some of the examples of countable, noun, uncountable, and with both with the quantifiers we use. Here is an exercise which you have to complete. Much, many, too much, too many, enough. Choose the right option, circle, and write on the line. You can use it, and then I will show you the result as well. Here is another exercise which you have to complete. There are 12 sentences. The missing quantifiers you have to fit over there. It's very easy for your learning, very good for your learning. So this is the answer key of A and B. You can see which of your answers are correct and where you have to work on. Now see, here you have to fill in much, many, lots of, a lot of, little, most, a little, a few और few. ठीक है, ये आपने यूज करने हैं इन सेंटेंसेस के अंदर. देन सी के अब आपको कितनी समझ आई है क्वांटिफायर्स की. यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. Here is another exercise which you have to complete, and you have to fill some, any, much, many, a lot of, a little, a few. So I hope students you learned something about intensifiers and quantifiers with the help of examples, definitions, and different exercises. Thank you and have a nice day.